Hello everyone. So this is our first video of the medieval Indian history. What is the medieval Indian history? As in the class 7th, the history which we are going to deal, we call that history as medieval history. The last year in the class 6th, the history which we have dealt with was the ancient history. Right? Our history is divided into three parts: ancient history, medieval history, and the modern history. Right? So in class 6th we have seen the ancient history where we saw the Harappan civilization, hunter gatherers, and the 16 major states, Magad and this, like Chandragupta Maurya, Ashoka, Harsh, right, Kushans, everything we saw in the last history, that in the ancient history was the part of the ancient history. And now we are going to learn about the medieval Indian history. In the medieval Indian history we are going to learn about the external invasions. जो बाहर से लोग आए थे ना, like मुगल्स जो आए थे, वो medieval हिस्ट्री के पीरियड में आए थे. मुगल्स आए थे, राइट, अफगानीज आए थे, ऐसे बहुत सारे लोग बाहर से आए थे. तो वो जिस पीरियड में होते हैं, दैट पीरियड वी कॉल इट एज एन medieval Indian history. Fine. So let's move ahead. Right? That what we are going to learn. Right? Today is just an introduction video to our medieval ancient history. Right? What are the terminologies we are going to see? What are the different terminologies? What were the difference between the medieval and the modern history, like regarding regards? So let's look into it. Okay. What is this? What kind of picture is this? I am not at all aware of it. This is the map of India. Alright, this map was made by Al-Idris. Al-Idris. Who was he? He was an Arab geographer. Means एक अरब जोग्राफर थे अल-इद्रिस. उन्होंने इस मैप को बनाया था. कब बनाया था? In 1154 CE. Means आज से कुछ 10,000 ईयर्स पहले, राइट, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स पहले, नॉट 10,000 ईयर्स पहले, सॉरी, इट इज अराउंड 1,000 ईयर्स अर्लियर दिस अरब जोग्राफर अल-इद्रिस हैज मेड दिस मैप. बट एक्चुअली all the places located over here are the right places. Like he located Kannauj, he located Uttar Pradesh, everything. But the thing is, it was marked in Arabic language. You can see the name of these places everywhere. Like these are the names written over here, right? These names were written in Arabic language. Okay, so one of the drawback of this map was Arabic language. And the most important drawback of this map is constructed opposite, like south to north. Means here is the Indian Ocean, here is the Sri Lanka, and this is the India. Means उल्टा बना हुआ है मैप, राइट. इट इज रेसिप्रोकल. जो एक्चुअल में है इंडिया उसका उल्टा है. इन्होंने द अल-इद्रिस, द अरब जोग्राफर, हैज कंस्ट्रक्टेड each and everything very finely. But the thing is, he has constructed Sri Lanka above the India and India below the Sri Lanka. Right? You can find it over here. The South India is where we would expect to find the North India, and Sri Lanka is the land at the top place. जहाँ पे हमको श्रीलंका फाइंड होना चाहिए. The South India is where we find the North India. Means यहाँ पे North India होना चाहिए था, but यहाँ क्या है? South India. And the Sri Lanka is an island on the top, and Sri Lanka is an island on the top. So that is the drawback of this map, right? So then also, can you imagine the people the 1,000 years earlier also people used to make the maps and used to read all the things. There at that time also we have geographers. उस टाइम पे भी कुछ geographers हुआ करते थे, right? जैसे हमने लास्ट हिस्ट्री में देखा था कि how we used to find the things. वैसे at this time they also used to trade and find the things. And this is the actual map, right? This is the almost actual map created by was firstly mentioned in the early 18th century in an atlas, right? This map was first time published in an 18th century atlas. The atlas was made in 1720.
This atlas was made in 1720 by a French cartographer. By a French cartographer. By the person Norvium of Duham d'Ils. Fine. The map seems more familiar to us. This map seems more familiar to us. As you can find, this is the South India, this is the Sri Lanka, here we have the Gujarat portion. So this map seems more familiar to us. But the earlier map was not familiar to us. So this is the surprising details. The map was used by the European sailors and merchants for their voyage. This map was used by the European sailors and the merchants for their voyage. So this is the difference between these two maps. You can find in both the images. What kind of difference? The first map was made by the Arab geographer Al-Idris, and the second was published in the 18th century, like 1720, in an atlas, right? So by a French cartographer. So this is the actual difference between both of the map. Then what's next? उसके बाद क्या हुआ? Certain new terminologies and the old terminologies. कुछ नई terminologies और कुछ नई पुरानी terminologies. As there is, like you can find the word Hindustan. What is this Hindustan? क्या है हिंदुस्तान? क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसको हम इंडिया बोलते हैं, या फिर ये हिंदुस्तान कुछ और था और हमने कुछ और बना दिया इसे, राइट? टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज एन इंडिया इन द modern national state, modern nation state. Today we understand India as a modern national state. हम इंडिया, आज जो हमारा इंडिया है, हम उसको हिंदुस्तान बोलते हैं. When the term was used in the 13th century by the Minhaj Siraj, a chronological who wrote in Persian, he meant that the area of the Punjab, Haryana and the land between the Ganga, Yamuna. He used this term for the political sense of the land which was the part of the dominations of the Delhi Sultanate. Means कौन से पोर्शन को, जो नॉर्थ इंडिया है ना, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये वाला पोर्शन आता है, अपर इंडिया, मीन्स अबव मध्य प्रदेश. हम कहाँ रह रहे हैं? वी आर इन मध्य प्रदेश. अबव मध्य प्रदेश के ऊपर का जो एरिया है, उस एरिया को हिंदुस्तान बोलते थे. मध्य प्रदेश और जो सदर्न इंडिया है, दैट वाज नॉट कंसिडर्ड अंडर द हिंदुस्तान, बट एरिया अबव आर स्टेट इज नोन एज द हिंदुस्तान. वाह. तो जब उसको हिंदुस्तान बोलते थे, जहाँ पे दिल्ली सल्तनत मीन्स जो पर्सन्स बाहर से आए थे, लाइक जो दिल्ली में आके सेटल हुए थे और दे यूज्ड टू रूल ओवर दैट एरिया, जब उसको हिंदुस्तान बोलते थे, तो फिर पूरे को हिंदुस्तान के सब क्यों बोलने लगे? द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड टू एक्सटेंड फ्रॉम द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूड द सदर्न इंडिया. धीरे धीरे इस टर्म के अंडर में एरिया बढ़ता गया. लाइक पहले एमपी और ये सब नहीं थे, धीरे धीरे दिस स्टेट ऑल्सो फॉल अंडर इट, राइट? तो ऐसे दिल्ली सल्तनत एक्सपैंड होता गया. दिल्ली सल्तनत क्या है? एक किंगडम था, राइट? एक किंगडम था जहाँ पे डिफरेंट राजाज मीन्स वन बाय वन आते थे और रूल करते थे. दिल्ली सल्तनत, उस पूरे किंगडम का नाम रख दिया दिल्ली सल्तनत. देन उसके बाद क्या हुआ? द एरिया एक्सपैंडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट इन द अर्ली 17th century. द बाबर यूज्ड the Hindustan to describe the geography and the fauna and the culture of the inhabitations of the continent. In the contract, in the early 17th century, the Babur used the Hindustan to describe the geography of the flora, fauna and the culture of the inhabitations of the Sultanate. तो in 16th century, बाबर एक रूलर थे इंडिया में. उन्होंने पूरे इस यहाँ के इंडिया के कल्चर और फौना को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे लिए एक टर्म यूज़ करी, दैट वाज हिंदुस्तान. कंप्लीट इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ करी, हिंदुस्तान. सो ये था एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द टर्म. मतलब हिस्ट्री में हमारे लिए वो टर्म कुछ और होता है, मीन्स पास्ट में वो टर्म हमारे लिए कुछ और होता है, और इन प्रेजेंट वो हमारे लिए टर्म कुछ और हो जाता है, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्मोलॉजीज. आई हैव वन मोर टर्म, राइट? वी कॉल इट इज फॉरेनर. वी ऑल नो हु आर द फॉरेनर्स. जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? फॉरेनर्स. वी कॉल इट टुडे एज द पीपल हु आर लिविंग आउट ऑफ इंडिया. जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, आज हम उनको फॉरेनर्स बोलते हैं. बट इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. जो इंडियन नहीं है, हम उसके लिए फॉरेनर वर्ड यूज़ करते हैं. बट इन द मिडवल पीरियड,
मिडवल पीरियड में द फॉरेनर्स वॉज एन स्ट्रेंजर हु अपीयर्स से इन अ गिवन विलेज एंड समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द कल्चर. बट मिडवल पीरियड में राइट जो हिस्ट्री हम अभी पढ़ रहे हैं इस पीरियड में राइट क्या होता था, उस पर्सन को फॉरेनर बोला जाता था जो आपके विलेज का नहीं है, जो आपकी सोसाइटी का नहीं है, जो आपके कल्चर का नहीं है तो इंडियन ही है बट एक्चुअली दूसरे विलेज से आया है, जो आपकी सोसाइटी में को बिलोंग नहीं करता, जो आपके कल्चर से नहीं है, उस पर्सन को फॉरेनर कहते थे राइट. इन हिंदी दिस टर्म द टर्म परदेसी be used to describe such a people in the Persian and in Persian ajnabi right. So हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं, परदेसी, and Persian लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं अजनबी. A city dweller therefore might be regarded as a forest dweller as an foreigner. तो जो सिटी dwellers आते थे मीन्स उन्हें हम बोलते थे फॉरेनर्स, बट द टू प्रीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स. अगर कोई दो जने एक ही विलेज में रह रहे हैं, एक ही रिलीजियस से हैं, एक ही कल्चरल बैकग्राउंड से, तो हम उन्हें फॉरेनर नहीं बोलेंगे. बट अगर सम पर्सन कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर या फिर डिफरेंट विलेज वी कॉल हिम एज ए फॉरेनर. ये एंशियंट टाइम पे होता था. पर आज क्या हुआ, हमने इंडिया को ही एक विलेज बना दिया कि इंडियंस सारे एक विलेज में रहते हैं, इसके अंदर कोई किसी के लिए फॉरेनर नहीं है. अगर आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो देन यू आर अ फॉरेनर. दीज वर द टू टर्मोलॉजीज. तो आपने देखा प्रेजेंट में और पास्ट में कितना फर्क हो गया था. पास्ट में हमने वो मैप देखा राइट अल इद्रिस का, दैट वाज लाइक कंस्ट्रक्टेड लाइक अपोजिट. श्रीलंका ऊपर है, देन उसके नीचे फिर सदर्न इंडिया, देन उसके बाद नॉर्थ इंडिया, लाइक उल्टा बना हुआ था वो मैप. देन वी सॉ द अनदर मैप विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द लाइक द फ्रेंच कैटोग्राफर राइट. देन वी सॉ द टर्मोलॉजीज कि हिंदुस्तान एंड फॉरेनर्स के बीच में क्या डिफरेंस है. हिंदुस्तान पहले क्या बोला जाता था और अब क्या है, फॉरेनर्स पहले क्या हुआ करते थे और अब क्या है. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स राइट कि एक्चुअल में हिस्ट्री में और हमारे अंदर क्या फ़र्क हो चुका है, हिस्ट्री में क्या होता था और अब क्या होने लग गया है. तो इसीलिए इंट्रोडक्शन रहता है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो राइट. अगर मैं फॉरेनर यूज़ करता तो आप सबके माइंड में क्या होता, मीन्स फॉरेनर मीन्स आउट ऑफ इंडिया. बट एक्चुअल में एंशियंट टाइम पर फॉरेनर आउट ऑफ इंडियंस के लिए यूज़ नहीं हुआ करता था. दैट्स वाई these terminologies, this is an introduction video to you ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए. Then what are the sources to learn the history? The sources are like you can see in the picture. We can learn this from the coins, manuscript right, from the like this pots and the constructions right. So these are the sources. Like we can see the historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of study and the nature of investigation. उनके पीरियड ऑफ स्टडी और उनके नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता था कि उनको किस चीज़ से पढ़ना है राइट. हिस्ट्री किस सोर्स से कंस्ट्रक्ट करना है. अगर वो लाइक एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो हमने लास्ट ईयर देखा था, तो उस टाइम पे तो मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ ही नहीं करते थे, और उस टाइम की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए. वो डिसिफरेबल नहीं है, मीन्स उनको हमने अभी तक समझ ही नहीं पाए. वो जो लैंग्वेज है वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज है, उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए. तो वहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ने का कोई या फिर उनकी बुक्स पढ़ने का कोई सेंस नहीं. सो देयर व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू डू कार्बन डेटिंग. वी यूज्ड टू डू द कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग मीन्स हम कार्बन डेटिंग करते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कितना पुराना ये आर्टिकल है, मीन्स कितनी पुरानी ये चीज़ है. द कॉइन और द wood or the ash or the bones of the animals and the humans, ये कितने पुराने, हम उनसे उनकी कार्बन डेटिंग करके हम उससे पता लगाते हैं. बट in this period we have pretty good amount of things. We have the manuscripts, we have the inscriptions, we have the architecture, we have the textual record of the information, we have the coins, we have pretty good amount of things. But in this book we are reading like, but हमने इस बुक में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं. What history we are going to learn in this book? The history between 700 to 1750 मीन्स ब्रिटिशर्स के आने के पहले तक की हिस्ट्री हम पूरी इसमें पढ़ लेंगे. हमने एंशियंट पढ़ी थी जिसमें फॉरेनर्स जो लाइक जो मुगल्स और ये आए थे इंडिया में उससे पहले का. फिर मिडवल में हम सिर्फ मुगल वाला देख रहे हैं, और फिर जब हम मिडवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम इंटर होंगे देन एट द टाइम वी आर गोइंग टू लुक इट इनटू द ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड. दे स्टिल
relay in the coins and the inscription, and architecture in the textual record for the information. The number and the variety of the textual record increases dramatically during this period. इस टाइम पे जो टेक्सुअल रिकॉर्ड है और जो नंबर्स है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए. मीन्स बुक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लग गई. क्यों? क्योंकि दिस पीरियड द पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड द मोस्ट वाइडली अवेलेबल. पुराने एंशियंट टाइम पे पेपर नहीं मिलता था, इसलिए हम वी यूज टू राइट ऑन द स्टफ लाइक हम बार्क लीव्स में लिखते थे, हम स्टोन्स के ऊपर लिखते थे. आपको पता होगा अशोका अपने इंस्क्रिप्शंस कैसे स्टोन्स के ऊपर स्टोन स्लैब्स पे लिखवा के दूसरी प्लेसेस पे भेजते थे. बट यहाँ पे पेपर बहुत ईजिली अवेलेबल होने लग गया, तो इस टाइम पे सारी चीज़ें पेपर के ऊपर लिखने लग गए. पीपल यूज इट टू फॉर द राइटिंग द होली टेक्स्ट. वाई वी यूज द पेपर्स टू राइटिंग द होली टेक्स्ट एंड द क्रोनोलॉजीज of the ruler, letter, teachers of the faint and the petitions, then the judicial record are registered in the accounts of tax. Means everything, every single thing is written in the papers. सब कुछ पेपर्स में लिखने लग गए. मीन्स आपके लेटर्स पेपर में होने लग गए, आपके जो टीचिंग्स है वो पेपर में होने लग गए, जुडिशियल रिकॉर्ड्स पेपर में, आप अकाउंट्स जो लिख रहे हो वो पेपर्स में, आपके टैक्स सब कुछ पेपर्स में. तो यहाँ पे वाइडली अवेलेबल रिसोर्स कौन सा रहा हमारे लिए? पेपर. मीन्स पेपर के अंडर में सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब कर रखी थी. तो दिस इज़ द थिंग, राइट. दिस इज़ द मिडवल हिस्ट्री. एंड मिडवल हिस्ट्री में मेन सोर्सेज से हम मिडवल हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. देन व्हाट इज द अदर थिंग? मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल एंड द रूलर्स एंड द मोनास्ट्रीज एंड द टेम्पल एंड दे प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी एंड द archives. These manuscripts and the documents provide a lot of details and the informations to the history, but they are also difficult to use. But इन्हें यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट था. But they are no printing press in those days as described the copying the manuscript by the hand. This is the serious problem because we rarely find the original manuscripts of the author today. We are totally depending upon the copies made by the later script. As a result, the historian used to read the different manuscripts and the versions of the same text to guess what the author had originally written. So यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. इसके अंदर में क्या हुआ? The problem was कि हमारे मिडल पीरियड में क्या हुआ, जो चीज़ें एंशियंट टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई थी उन्हें इन मिडल पीरियड में, एज यू कैन फाइंड इन दिस पिक्चर, राइट, पर जो पीपल थे, जो पर्सन्स थे, उन्होंने मिडल पीरियड की मैन्युस्क्रिप्ट, ये दिस इज़ द मैन्युस्क्रिप्ट, उन्होंने इन्हें बुक्स और कॉपीज़ के अंदर लिख दिया, पेपर्स के अंदर लिख दिया. और पेपर्स में लिखने में एक्चुअल में प्रॉब्लम ये था, एट द टाइम वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था. तो ये जो चीज़ें थी ये सब कुछ हैंड से करना पड़ती थी. तो बहुत सारे एरर्स हो गए. बिकॉज इफ ह्यूमन इज़ डूइंग अ थिंग देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एरर्स होंगे. बिकॉज वी आर नॉट मशीन, वी कांट डू द वर्क 100%. एरर्स होंगे. और उन्हीं एरर्स की वजह से ऑथर्स जो अब हिस्ट्री पढ़ते हैं वो कुछ आइडियाज़ अपने लगा के उस हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस इज़ द स्टफ, ये कंप्लीट स्टफ जो हमने अभी तक देखा. दिस वॉज अबाउट व्हाट इज़ द एंशिएंट हिस्ट्री, व्हाट इज़ द मिडवल हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या सोर्सेज यूज़ करते थे, मिडवल हिस्ट्री में हमको सबसे ज़्यादा सोर्सेज क्या मिलेंगे, कौन सी टर्मोलॉजीज. मॉडर्न में हम कुछ और समझते हैं और एक्चुअल में मिडवल हिस्ट्री में कुछ और थी, राइट. मिडवल हिस्ट्री में अब कैसे उन एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को आज तक हमने संभाल के रख रखा है. दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन टू आवर हिस्ट्री. द फर्दर इन आवर अपकमिंग वीडियोज वी आर गोइंग टू कवर द मोर ऑफ थिंग्स अबाउट दिस हिस्ट्री. सो बाय दैट टाइम टेक केयर एंड बी सेफ. थैंक यू एंड बी कनेक्टेड.